Touchwood, you've been glowing शादी के बाद. हाँ, so शादी बहुत अच्छा लगा. काश मैं लड़का होती, मैं तवे तोड़ दूंगी. भूसबा माया, करेक्ट. आपकी एक और सुपर पावर आई थिंक ये है कि आप with that smile. I still want to be happy. मैं से बचा के रखूंगी. Who's that one filmmaker you're dying to work? So many just going in my head right now. To a lot of scripts you said get lost. No. You've been very like sorted in your head about the kind of films you want to associate yourself. तो पहले बस फर्क ये था कि मैं स्क्रिप्ट्स ढूंढती थी, अब मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स ढूंढती हूँ. चॉम लाओ, ऑडियंस खुश होनी चाहिए. Just let it be. जो हो गया सो हो गया. मजा आता है ऐसे काम करके. हाय, मैं हूँ यामी गौतम धर और आप देख रहे हैं और बताओ विद स्तुति. Hi guys, welcome to yet another episode of Aur Batao. And अभी hanging out with someone जिनको मैं कह रही थी कि यू नो के ट्रेलर्स आते हैं, ट्रेलर के बारे में काफ़ी कमेंट्स होते हैं, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं. यहाँ इनकी इतनी तारीफें हुई हैं. यामी गौतम, वेलकम टू और बताओ. थैंक यू स्तुति. Looking at you, I was like, हम दिल्ली पहुंच भी गए प्रमोशन के लिए. मतलब So good to see you here, Stutee. Thank you, that's so sweet. So अभी I've shifted to Bombay, तो जरा और you know regularly मुलाकातें हो सकती हैं हमारी. दिल्ली की याद आई, बॉम्बे में हम हैं, अब जरा कोलकाता की बात करते हैं because Lost took you to that city. But I want to know, क्योंकि obviously actresses have to be so careful about what they eat. आपने मतलब खाया कोलकाता का खाना है, नहीं खाया? Oh, absolutely. मतलब और प्लस टोनी दा के होते हुए खाना नहीं खाया तो मतलब it's a crime. एंड टोनी दा को सिर्फ बहाना चाहिए होता था टू ऑर्डर समथिंग. क्या यमी, क्या शॉट दिया, भीषण मीठा और चॉम मंगाओ मैडम के लिए. And until his wife Indrani said, listen, don't fire that, over her shoulder. You want to eat sweet, so you're just ordering. She does that every day. तो बहुत मजा आया. मतलब पूरी फिल्म ही स्ट्रीट्स पे शूट हुई है, रियल लोकेशंस में शूट हुई है. तो जहाँ उनको कुछ दिखता था कि अरे वो कुल्हड़ वाली चाय, मैडम को चाय पसंद है, जाओ मैडम को चाय देकर आओ. एंड दैट वुड बी द मोस्ट परफेक्ट टी. सो मच सो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, आदित्य को फ़ोन किया. चाय कहते पी लो, ठंडी होगी. मैंने कहा नहीं, मैं से बचा के रखूँगी. दादा से विल कम बैक अगेन, आई विल गेट यू मोर टी. So it's just the warmth, in that city, and also the team that you're working with. So of course हमने सिर्फ खाया पिया नहीं, हमने बहुत काम भी किया है, बहुत ज़्यादा. Of course. And that was Dada's way. That was his way to reward me with some home cooked food and street food and everything. No, also very excited because एक तो expectations are high because he's directing it. And also because you've chosen to do this film. And I'll tell you why I'm saying this. Because अगर कोई आपकी filmography पे एक नज़र घुमाएगा तो आपकी हिंदी फिल्मों की जर्नी विकी डोनर से शुरू हुई. एंड उसके बाद irrespective of the size or the length of your character on screen, you've been very like sorted in your head about the kind of films you want to associate yourself with. You just zen-like quality आपकी ये आपने over the time develop करी. It was always there in you because I sometimes really envy how sorted in your head you appear to be. That's very interesting choice of words. Thank you. That's very kind of you. No, I think they're both. कुछ चीज़ें होती हैं जो आप में instinctively होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं in your journey. And I think time की बात है, experience की बात है. And मैं एक चीज़ में बहुत clear थी that मुझे, जैसे आप कुछ ऐसी फिल्मों की बात करी जिसमें आपको या किसी को लगा अच्छा रोल इतना नहीं था, but मैं it never created any fear in me कि अच्छा लोग क्या कहेंगे या तुमने ये रोल क्यों किया. अगर मुझे करना है, मुझे करना है. मुझे अगर एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना है जो मुझे बहुत पसंद है, पर रोल इतना कोई बात नहीं, आई विल डू इट. तो उस टाइम मैंने मुझे जो सही लगा, जो मुझे लगा, हर एक फिल्म एक स्टेपिंग स्टोन होती है ना. जब आप एक सही तरीके से एक धीरे धीरे चले हुए हैं अपनी जर्नी को, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ले रहे हैं और आगे जा रहे हैं, तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो फिर आगे नहीं चल पाएंगे. देयर विल बी चॉइसेस व्हिच ऑफ कोर्स इन योर हार्ट कि अच्छा नहीं यार, ये कुछ और बेहतर करना चाहिए, पर वो और बेहतर आना भी चाहिए. तो पहले बस फ़र्क ये था कि मैं स्क्रिप्ट्स ढूंढती थी, अब मैं अच्छी स्क्रिप्ट्स ढूंढती हूँ. क्या बात है. I like that. So to a lot of scripts you said get lost. No. And Lost जो है आपने choose किया. So tell me, starting with this, what drew you to this script, this film?
पहली बात व्हेन आई हर्ड टोनी दा इज गोइंग टू बी डायरेक्टिंग, तो अपने आप में ये दिमाग में एक्सपेक्टेशन आ जाती है, और आनी भी चाहिए, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव पिंक. एंड फिल्म देख के पता चलता है कि किस तरह की सेंसिबिलिटीज वो डायरेक्टर रखते हैं एज अ फिल्म मेकर. तो स्क्रिप्ट मुझे लगा कि एक स्क्रिप्ट ऐसी है जिसमें कुछ प्रिटेंस नहीं है, देयर इज नथिंग प्रिटेंशियस अबाउट इट. एक अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा रोल है, और मुझे टोनी दा के साथ काम करना है. और ऐसी स्क्रिप्ट में मौका मिल रहा है काम करने का विच इज़ अ बैलेंस बिटवीन समथिंग विच हैज सब्सटेंस एंड एट द सेम टाइम ऑडियंस के साथ एट द एंड ऑफ द डे एंगेज करनी चाहिए. आई डोंट बिलीव इन फिल्म्स कि सिर्फ मुझे अच्छी लगनी चाहिए या सिर्फ मेरे लिए. ऑडियंस खुश होनी चाहिए. इट विल फाइंड इट्स ओन ऑडियंस एंड इट नीड्स टू बी डन द राइट एंड द बेस्ट वे. सो आई थॉट टोनी दा इज दैट पर्सन. No, you're helming this project, and of course we're looking forward to it. और जैसे आपने बात की about it finding its own audience, तो you तो definitely have a very loyal fan base, which is so great, जो आपने nurture किया है over time. पर जब आप बात कर रही थी about पहले मैं scripts ढूंढती थी, अब मैं अच्छी scripts ढूंढती हूँ, you know, there's always that lull, because ये industry ऐसी है और एक्टर की लाइफ ऐसे होती है that a lot is dependent on the product, like the raw material that actor gets. कि अगर आपको अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही है, those lulls, how did you know, deal with those, the bits where you thought I'm not getting what I deserve, or I deserve better? Patience, Stutee. I think patience is a virtue, not just in our industry but just generally in life. And I'd say I'm really blessed with a wonderful family. You need that emotional support. You need that emotional strength, and those people around you who support you, who are there for you no matter what. And मेरे हिसाब से there's nobody like your family. No one can take that place. But फिर भी सोचते हैं कि चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा और देखते हैं, कहीं लुक टेस्ट देख के कहीं वो कुछ होगा, something will happen. So I think Kabil was also one of those films. And then finally, I think with Uri and thankfully with Bala after that, things completely took a big turn. And I thought got me, I won't say my due, but then got me to a place where, as I said, I can अच्छी स्क्रिप्ट तो खैर दिल में मैं पहले भी ढूंढती थी और वो मेरे दिल में रह जाती थी वो बातें वो बाहर नहीं आती थी. तो that time came. That's so lovely. Okay, you know, I will obviously not ask you to like name things, but what would happen? Like, what would go into your head जो आपको लगता था क्या है ये यार, you know, like मतलब वो क्या है वाली स्क्रिप्ट आज भी आपको पढ़नी पड़ेगी. That's a part of my job. वो तो हमारे. But are you good at gauging now कि ये this will definitely work, this will not? I was always good at gauging. That's what I'm saying. बस वो दिल में रह जाता था. अब मैं बोल देती हूँ. So that's a superpower. So what are some of the things that you know you immediately knew कि ये नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा. अरे भाई उसी वक्त पढ़ते वक्त ही मिलते वक्त ही. But as I said, मतलब आज मुझे बैठ के बहुत आसान है वो you know बात करना, हंसना या to take it lightly. And I think as actors we take ourselves very seriously. इतना seriously नहीं लेना चाहिए. अपना काम अच्छे से करो और बाकी just let it be. पर पता चल जाता है. एक स्क्रिप्ट भी अगर आपके पास ठीक ठाक है और जो डायरेक्टर हैं आपको लगता है कि नहीं यार कुछ है इनमें which that I trust that director, or the script is okay and the director is so bad, then God help you. तो हर तरह का एक्सपीरियंस ज़रूरी है. हर तरह की उस मौके में जब आप होते हैं तो आपको लगता है नहीं यार I didn't come here for this all the way. शायद मैं IAS होती in my head again, शायद मैं कुछ और कर रही होती, मैं खेती बाड़ी कर रही होती, कुछ भी कर रही होती, but कुछ भी कर रही होती खुशी से कर रही होती. That's very important. मेहनत करना, दिन रात एक करना बहुत अच्छी बात है, उसमें मज़ा आता है. पर वो जो किस आप भाव की फीलिंग से कर रहे हो वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप मन you're not excited when you wake up. I used to hear a lot of actors talk about it or people talk about it. It's actually true. If you wake up, आप चाहे 2 घंटे की नींद है बट आप एक्साइटेड हैं कि आज मुझे अच्छा लॉस के बारे में बात करनी है. इट्स अ फिल्म दैट आई डोंट हैव टू फेक और मेक वर्ड्स टू मेक यू बिलीव कि सुती बहुत अच्छी फिल्म है, देखो आप अंदर से हो पाएगा. अभी आज बहुत झूठ बोला है मैंने. Just come to that कि हम शायद मिले भी होंगे knowing that the film is not a Yami. Like what? धीरे-धीरे I graduated to a point where screening पे मैं बोल देती थी कि ये ना ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं हुआ है.
फिर धीरे धीरे आया कि सेट पे मैंने कहा ये ना ठीक नहीं है, आप देख लो. So nice. Okay. Now I've come to a point that जब तक ठीक नहीं होगा सेट पे नहीं जाएंगे. So, I love this. And you know, नजर ना लगे, but आपकी एक और सुपर पावर आई थिंक ये है कि आप with that smile, you know, बोल देते हो, ठीक है? स्माइल ऐसी होती है, हाँ सर ये ठीक नहीं है सर कुछ गलत होने वाला है सर, आप कुछ कर सकते हैं तो देख लीजिए. But I do say. Yeah. So that's so nice. And you know, over the years you have, like you said, spoken about it, and rightly so. You called out some disrespectful reviewers about your film. You've spoken about how you don't look at round tables as a validation, which I thought was really necessary for actors of your caliber to say. But you know, मैं वो debate शुरू नहीं करना चाहती about insider outsider, but honestly, as someone who's not, you know, like from that core of that industry, family support ज़रूरी होता है. But how do you slowly find your voice and your feet? Like over the years, we almost feel like we've seen your journey so close from 2012 to now, when now you can call out these things. I don't ever wish to be disrespectful towards anyone. अगर मैंने किसी को मैसेज करके बोला होगा कि thank you so much for the invitation, but I won't be there at XYZ award show. I've said it in the most respectful way because that's my upbringing and that's where I feel आप कोई भी बात जितना आप एक sorted तरीके से बोल सकते हैं उतना it's better, you know. Why to be disrespectful towards anyone? हर कोई अपना काम कर रहा है यहाँ पर. और ये सब जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सोचा. ये सब वो बातें हैं जो शायद एज आई सेड पहले हम थोड़ा हंस के बोल रहे थे, बट आपको समझ आ रही हैं अपने बारे में. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट पर्सपेक्टिव कि आपको व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल. व्हाट आर द थिंग्स आज आप खुश हैं, आज आपको लग रहा है अरे हर कोई आपको अवार्ड देना चाहता है या अप्रिशिएट करना चाहता है, जो अच्छा लगता है. We're all humans, you know. अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब Thursday के बाद, especially there was certain big section of media fraternity. It's never happened, Stutee, that एक जो media trial होता है, no one, we're not allowed to be a part of that, thankfully. And but I was told कि आपको आना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था. We all stood up and we all clapped. तो इस तरह का that was very personal for me, and I would love to thank your colleagues and everyone out there who supported. But मैं अपने आप को, बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी ऐसी चीज़ से एसोसिएट नहीं करना चाहती जहाँ पे आज मुझे खुशी हो रही है पर कल जब नहीं, अगर कोई मुझे ना अवार्ड दे या ना कहीं सो कॉल राउंड टेबल पे बुलाए, जो अब राउंड टेबल नहीं वो स्क्वायर हर शेप में, तो I understand what was the meaning of these sessions. It is really good. I've myself been part of one and I really enjoyed that. But अगर आप अपनी so called success, बहुत बड़ा word है, पर जो भी खुशी, अगर इन चीज़ों से जितना I want to detach myself with all this, ताकि कल को जब अगर ये नहीं हो for some film which in my head I thought I deserved, फिर मुझे बुरा लगेगा. तो वो मुझे बुरा नहीं फील करना. I still want to be happy. I still want to be कि अपना काम किया, अच्छे से काम किया, इतना अच्छा काम किया कि मुझे कभी ओवर प्रमोशन की जरूरत ना पड़े. एंड ऑडियंस डिसाइड करे, ऑडियंस को लगे कि अच्छा यामी की फिल्म है, ट्रेलर अच्छा लग रहा है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स लेट्स गिव इट अ शॉट. That's it. So it's nothing out of disrespect to any particular person. I respect them for giving me respect. बहुत respect हो गया है, थोड़ा edit भी नहीं कर सकते. So much love, and I'll be interacting with all of them today. But this decision was simply out of this thing. Okay, touch wood, you've been glowing शादी के बाद, and you know we saw that complete look transformation and everybody was like how nice she's looking. Tell us how life has changed for you with after marriage. I had no idea this is what people said. I thought I always look nice. No, you always look nice. It's you're glowing. I thought newlyweds would like to hear that. मुझे वो अभी भी फील वैसे ही होते हैं. Actually, my cheeks, they are blushed, but they are blushing a lot internally. Right now. हाँ, so शादी बहुत अच्छा लगा. I think जब आपको ऐसा पार्टनर मिले, I'm sure anyone who connects with this thought, who's right for you, at emotional level, value system, तो
family system तो सब बहुत अच्छा है. So I feel really, really blessed and happy that got Aditya as my partner. How sweet. So do you use that superpower at home कि मैं script level पे बता दूंगी ये तुम करो और ये मैं करूँ और या हम कोई ना करे? Do you do that? No, I don't do that. He's not read any of my scripts. He has heard all the ideas. Of course, we do discuss. I have read all these scripts and I love them. I'm like, काश मैं लड़का होती, काश मैं ये करती और काश this and that. तो हम ऐसी मस्ती करते रहते हैं. But I think यही होता है एक अच्छा relation यार, एक अच्छा एक professional environment भी जहाँ पे you're having a healthy discussion. It's a discussion. Decision हमेशा आपका अपना होना चाहिए. उनका of course अपना है, मेरा अपना है. We know we'll never overstep each other's if there is any boundary. But you want him to direct you? Yeah, why not? But I don't know. I mean, even he needs to be asked because everyone is different. Being an actor, शायद मुझे लगता है कि it'll be I'm comfortable, but maybe why even he needs to be asked because he needs एक emotional, obviously एक bond है, एक emotional relationship. I'm surprised that you haven't asked him. No, I never asked him. I've never asked him because he's anyway the producer of one of my forthcoming films and the writer, which was supposed to be his first film. And so हाँ ऐसा कभी specifically मैंने नहीं पूछा because I know if there is any part of there's any role which he would want me to play, it'll come to me. So वो इतना वो faith वो है. Very cool. Okay, getting the discussion back on this film, any special thing that you did for your role to prepare for the role? So I think that's very important. And in terms of performance, with Dada, less is more. That's very important. We might feel कभी कोई scene होता है कि यार इसमें तो ना मतलब मैं तवे तोड़ दूंगी, मेरा expression तो मतलब ऐसा close up आएगा, कुछ नहीं है, कैमरा वो है, वो दूर है. अब मैंने कहा दादा डन हो गया. मैंने कहा how was it? Performance very good. Be sure, चौम लाओ. I'm like no दादा पक्का हाँ पक्का, इतना वो सब उसका जरूरत नहीं है. Feel honesty, performance, honesty, integrity that Vidhi has. I saw it. It's there. So that is so refreshing. Can I just say that I love your Bengali mimic? It's so on point. It is, right? It is. It's so great fun I would to ask listen him to that. Can you answer like rest of my questions? Like Dada, done. Goosebump आया. Correct. Goosebump. Correct है. Come on, let's go. अभी हम जाके जंबो प्रॉन पहले खाएगा, उसके बाद तब तक short setup, next shot. Come on. He is so cool to work with. इतना hectic shoot था, इतना कुछ हम shoot कर रहे थे, but मजा आता है ऐसे काम करके. I think आपको अपने सारे interviews इसी tone पे. Dada has not seen this, so I think it's going to be a surprise for him. This is so much fun. Okay, अगर आप चाहें आप please इसी में continue कर सकती हैं. But as actor Yami, who now is becoming greedy and she's like I deserve better roles and I want it. Who's that one filmmaker you're dying to work with? Yeah, there's so many, Stutee. And no, I'll tell you why. Because in the past 1 year, I've worked with some 6-7 new directors. Actually, if you see all my life, except for Sriram sir, and maybe Sanjay, I've worked with all either first-time filmmakers or second-time filmmakers, and they were all so good. Most of them were so good with their craft. So as much as that list, there's a very long list, so it's very unfair to take one name. But I would love to be surprised. And you realize it is the script first that has that magic. It is that writing first. Either it's there, it's not there, you get it from the writing. And then of course, the director. And more than ever, now it's the time for, it's not about me being greedy, it's not about me feeling I deserve it. It's all those things keeping aside. This is the time literally where as an actor, I just need to do my job on set. The real test comes, I think, on the writers and directors and the producers who want to take punt on the correct casting of the film versus that I need only, of course, there will be really big stars, they'll always be there, but abhi, you're as good as your previous film. You're as good as what the character of the film is versus who's the actor. And a contemporary that you deeply admire, respect, who are doing the kind of work that you would want to do?
you know, there's so many names coming in my mind. So can I just say most of them? I think most of them. I think they're all really good. All of them. And even if no, I'll tell you why. I'll tell you why. Even the ones who are probably, if you say, doing only certain kind of roles, or you know, just come song and dance film bolte hain. Everyone. It's a very hard place to be. It's a hard place for everyone. I respect anyone who's doing their job with utmost sincerity and belief is good for me. And while again, maybe 2 years, 3 years back or 5 years back, I would have said, okay, you know, I would have loved to do that. I would have loved to play that role. There's still so many just going in my head right now. But they're all interpretations, you know. 2 actors can do a fantastic job with the same role also. They'll just be different interpretations. So, जो हो गया सो हो गया. अब आगे का देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है. बिल्कुल बिल्कुल. And I love the positivity, the fact that you're rearing to go. And I'll tell you, my biggest challenge right now is to whatever these 4 films also of mine that are yet to be there. And I know I'm this much, I won't say confidence, but believe I have that the films have turned out well. And I have done a decently good job. No, I've done a good job in those films. But now the idea is to forget all that and to completely break and to do something entirely different, which is what I'm looking for. You know, has there ever been a movie of yours जिसका success surprised you? ये तो नहीं सोचा था मैं. No. No. Even the failure has not shocked me. I'm in the most zen state of mind. Hello, mummy, ये कल होने वाला है. मत देखना. TV पे आएगा, वहाँ देख लेना. टिकट्स ले ली, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ अच्छा खाना खा लेना. बट पापा को थोड़ा दूर रखना थिएटर से. अच्छा नहीं. So no, I mean that's हाँ, मतलब because I think you'll feel bad if you feel this is, जैसे आपने पूछा कि नहीं यार, it deserved more. Maybe I deserve little more opportunities after certain films. But that's okay. As I said, हमेशा हर एक चीज का टाइम होता है. वो क्या बोलते हैं, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता. तो हर एक चीज का एक टाइम होता है. But I have been absolutely accurate today. I like this. You know, I think next time we meet, मैं पहले कान में ना थोड़ी खुसर कर लूँगी. What do you think? I think maybe the success of Vicky Dona is what I would have not anticipated, because उस time success का मतलब ही नहीं पता था. I remember एक interview में I think John had said this film is going to do 25 plus crores as business. I was like, what? My film, like our film, itna? We didn't know it's going to be. It's not. It'll go beyond just numbers. It'll be much more than that. But just to hear that number, I was like, no. I mean, I couldn't breathe for good like 10 seconds. So I remember that feeling. I was like, ye to matlab, is he just saying it? How does he know? So I think that did surprise me. I think. But I think it doesn't surprise any one of us. Please keep flashing your beautiful smile, and all the best for Lost. अब आपने बोल दिया, I know this is a good film, so we have nothing to worry. We'll take your word for that. But thank you so much. Thank you, Stutee. Pleasure talking.